Hello and welcome to another session of Active Server Pages. Today we will discuss about ASP forms, communication with forms using ASP, and we'll talk about request object and cookies. Okay, so let's start with ASP form. इनफैक्ट ASP में फॉर्म्स नहीं बनते हैं, फॉर्म आपके बनते तो HTML में है, सबमिट ASP पेज को किए जाते हैं. ठीक है, हम जब भी फॉर्म बनाते हैं तो हम इसको दो मेथड से सबमिट कर सकते हैं. आइदर वी कैन सबमिट इट विद द हेल्प ऑफ गेट और वी कैन सबमिट इट विद द हेल्प ऑफ पोस्ट. ओके, if you are submitting it with the help of get method, then whatever the inputs you are giving, this is available in the URL of the submitted page. ठीक है, so जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये URL के अंदर इनपुट हमारे दिखाई देंगे. ठीक है, मैं नहीं चाहता कि URL के अंदर इनपुट्स दिखें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गेट की जगह पे पोस्ट से सबमिट करना होगा. ठीक है, इसको रीड करने के लिए हम दूसरी एंड पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का तरीका क्या है कि here what we do is we just whatever is sent with the help of get or post, so get से जो भेजा गया है उसको request.query string से रीड किया जाता है और जो post से भेजा गया है उसको request.form से यूज़ किया जाता है. ठीक है, I'd like to show you something. If you remember, in first session we have created one ASP server in XP and one ASP server in your Windows Server 2003. So we can use any of them. Okay, I am using the server that we have created in XP. Here what we need is start the page. Okay, then there is end delimiter. I am putting here the name as submit.asp. okay, remember this should be written in double quotes so that it will not take .txt extension. दूसरी बात, इसको कहाँ रखना है, C ड्राइव, inetpub, www root. ठीक है, यहाँ पे हमने एक पेज बना के रख दिया. ठीक है, इसको हम बाद में अभी मॉडिफाई करेंगे. जस्ट टेक अनदर फाइल इन notepad. I am taking another instance of notepad so that we can access the second file over here, and in that we'll create a form. Okay, okay, so here what I want to do is I want to create a form. It's HTML code, it's nothing to do with ASP. Just it is only a HTML page that communicates with ASP page. Okay, तो हमने क्या किया, सबसे पहले नाम form, then we have defined method equal to get and action equal to whatever the name you have given to your submit page. जैसे we have given here submit.asp, so just write here the full name of the page. submit.asp. okay, now in the form what I am giving here is one input called uname and type equal to text. Okay, then I am giving here another input as
whatever you want to write, you can write here in HTML format. Okay, I am putting here, please enter your name. Okay, and at the end I am closing the form. Okay, name the file as anything you want, but the extension should be .html. Okay, I am putting here index.html because it is the first file that executes from the server. Okay, so we don't have to write the name of this file if you want to execute. We have to write, because here in settings index.html is not there, and okay, so you can see the page saying enter your name. Okay, I'm going to enter my name and just press OK. Here you see that in URL you can see whatever you have entered. This is the drawback of get method. Okay, now come on to this site. मैं चाहता हूँ कि यूज़र को वही नाम हेलो के साथ दिखे जो भी कुछ उसने एंटर किया हो. ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग I had just made it bold and italic. Hi, then response.write name. Okay, and name कहाँ से मिलेगा? Name equal to request dot query string. In query string there is a variable named uname. Okay, come back to this page and just refresh. Okay, one more thing, if you know that the page is using get method, you can type here anything and you will find here the same as result. Means you can modify the URL, it will automatically take as submitted form. Okay, now what happens if we have used post method? Just change here method, post, save it, come back here, just refresh the page, type here anything. Here you find that it is not showing anything here as well as here also. It is not showing here also because here what you have done, you have asked for a variable called uname from request.queryString. Okay, अगर यही चीज़ हमने पोस्ट मेथड से मंगाई है तो it will not be asked with the help of request.queryString. It should be taken as name equal to request.form, and here you find uname. Okay, just refresh the page and you can find whatever you have submitted. It is not displaying in URL, but you can access it here. Okay, so this is the beauty of this post method.
here you can see request.form is used. We have already discussed this, that whatever written in post method, we can access it with the help of request.form. Okay, now there is another constraint called form validation. Validation क्या होता है कि अगर आपने जो है वर्ड्स लिखे हैं, कोई फील्ड दिया है डेट का, तो उसमें डेट्स जो हैं वो किसी खास चीज़ से मैच करनी चाहिए, या आप अगर क्या कहते हैं कि सपोज़ किसी का फ़ोन नंबर मांग रहे हैं 10 डिजिट का होना चाहिए, तो वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई 8 डिजिट का या 9 डिजिट का नंबर ले आए. ठीक है. फॉर ऑल दीज थिंग्स what we do is we check the size of the variable that we are getting. ठीक है. The best way is check it with the help of JavaScript on the client side. ठीक है. बट अगर आप इसको सर्वर साइड पे करना चाहते हैं, you can do it on server side also. Now another term called cookie. What's the purpose of this is, if you have given some information about yourself, and you are revisiting on the same system or same website, same web page, you don't want every time to type your password from your own computer. आप अपने घर के पीसी पे बैठे हैं, जीमेल का अकाउंट रोज़ एक्सेस करते हैं. आप पहले दिन तो ये ज़रूर चाहते हैं कि हाँ ठीक है, आज मेरे से पूछ लिया पासवर्ड तो अच्छा है, दैट्स अ सिक्योरिटी. बट अगर दिन भर में आपको 10 बार एक्सेस करना होता है, वो 10 बार आपसे पासवर्ड ही पूछे, इरिटेशन होने लग जाती है कि सिस्टम मेरा है, ठीक है, इसको और कोई लॉगिन कर नहीं सकता, फिर भी ये मेरे से रोज़ रोज़ पासवर्ड पूछे जा रहा है. सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि नहीं, इसको इस सिस्टम पे तो मैं पासवर्ड पूछ चुका हूँ इनका, और ये दिस इज़ द यूज़र हु हैज़ यूज्ड इट प्रीवियसली. फॉर दिस वी यूज़ कुकी. What we do is, in form of cookie, we store the values in the user's end. ठीक है. यूज़र के साइड पे डेटा को अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए हम कुकी इस्तेमाल करते हैं. एंड द वे ऑफ एक्सेसिंग दिस इज response.cookie. देन वी पुट द वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू सम वैल्यू. ठीक है. अगर आप चाहते हैं खास टाइम पे एक्सपायर हो जाए तो एक्सपायर्स, और उसके बाद वो डेट टाइम कि इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए. ठीक है. इससे क्या होगा कि जब यूज़र नेम आपको पता चल गया है, अपने यूज़र नेम को परमानेंटली स्टोर कर दिया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप उसी वेबसाइट पे जाएंगे, response.cookie के अंदर आपको वो वाला नाम मिल जाएगा. एंड यू डोंट हैव टू गो बैक टू द फॉर्म. मीन्स यूज़र को फॉर्म बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. कुकीज़ का फ़ायदा क्या है कि हम अगर 10-12 पेजेस के बीच में नेविगेट करवाते हैं यूज़र से, तो हर पेज पे हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि यूज़र का नाम अगर ये एंटर करके आया है, यूज़र नेम पासवर्ड, देन इट इज़ ओके. अगर नहीं करके आया है तो ये वापस रीडायरेक्ट हो जाए पहले पेज पे. ठीक है. हियर यू सी द वे ऑफ रीडिंग कुकीज़ एंड द वे ऑफ राइटिंग कुकीज़ ऑल्सो. ओके. If you want to read all cookies, then the way is you have to use loops. ठीक है. लूप एक खास तरीके का प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कि हम जब सीक्वेंस में कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. हियर लूप्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. कुकी के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, वन बाय वन दे आर रेड आउट एंड दे आर रिटन ऑन टू द यूजर्स स्क्रीन. Just see, this will be the output because we have stored these things. Here we are reading and this one is the output. Okay. Now, if suppose you are adding some parameter onto URL, फॉर्म को सबमिट करते समय हम चाहते हैं कि कुछ डेटा जो है हमारा क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में जाए और कुछ डेटा हमारा क्या कहते हैं कि पोस्ट मेथड से जाए. तो इन दैट केस सबमिट के एक्शन के लिए जो हम
पेज स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके साथ में हम URL के अंदर पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम एंकर टैग पे भी चाहते हैं कि वो फॉर्म सबमिट करने जैसा लगे तो वी कैन यूज़ इट लाइक दैट ऑल्सो। वहाँ भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी हियर इन एंकर टैग welcome.asp, इसके साथ में 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग मोर देन 1 वेरिएबल दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड साइन। ठीक है, that is working in the same way as this form is working. Now there is some small task for you. What you have to do is you have to create a procedure to get form values, and secondly you have to explain cookies, what actually cookie is, and just test it out that how cookie is working. Okay, thank you.